Hi guys, in this section we are going to discuss about the manufacturing process of AC blocks. AC blocks means it is autoclaved aerated blocks. What is an AC block? Autoclaved aerated concrete blocks are lightweight and durable building products. Autoclaved aerated blocks, that is ASC blocks, वो lightweight होता है और बहुत durable building products है और air constitutes almost 80 to 85% of ASC block and density is very less. ASC blocks का जो 80 से 85% है that is air and इसकी वजह से उसका density है that is very low comparing to conventional red clay bricks. What are the ingredients of ASC blocks? ASC blocks जो है उसके अंदर में क्या क्या मटेरियल होता है, किस किस मटेरियल से ASC blocks बनता है? First is fly ash, then cement, lime, water and gypsum. These are the four material which is commonly used, and along with that aluminum powder is being added as a forming agent. A फॉर्मिंग के लिए एक एल्यूमिनियम पाउडर भी ऐड होता है और फ्लाई एश, सीमेंट, लाइम, वाटर, जिप्सम ये है उसका मेन इंग्रेडिएंट्स. बेसिक केमिकल प्रोसेस ऑफ एसी ब्लॉक्स. एसी ब्लॉक्स होता है उसका जो एक केमिकल प्रोसेस से बनता है और उसका क्या व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ एसी ब्लॉक्स. Actually, we already discussed that it is made of fly ash, lime, cement, gypsum, and water mixed with aluminium powder. What happens is that the aluminium powder chemically reacts with the lime and water टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो लाइम और वो पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ वो रिएक्ट करते हैं केमिकली और उसी से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है. The hydrogen gas in turn produces millions of non-connected air gaps and escapes into the air making the blocks porous. ये हाइड्रोजन गैस जो बनता है वो मिलियंस ऑफ एयर गैप्स बनता है. ये जो मास के अंदर में बहुत एयर गैप्स होता है और जो हाइड्रोजन गैस बाद में एस्केप होता है और जितना एरिया में जो हाइड्रोजन गैस था वो बन जाएगा पोरस. The non-connected air gaps expand the slurry and the slurry expands to 2 to 3 times. द इंग्रेडिएंट्स का जो स्लरी बनता है उसके अंदर में हम एल्यूमिनियम पाउडर डालते हैं. एल्यूमिनियम पाउडर तो है उसके साथ रिएक्ट कर 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 हाइड्रोजन गैस बनता है और जो हाइड्रोजन गैस एस्केप होने के बाद उसके वॉइड्स जो बच जाता है दैट मेक्स द एसी ब्लॉक इट्स लाइटवेट प्रॉपर्टीज एंड पोरोसिटी. और वो क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर मिक्सचर है उसको 2 to 3 टाइम्स एक्सपैंड भी करता है बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए फॉर्मिंग एजेंट. This aircraft force makes the ASC block lightweight and induces its insulating properties. ये जो अंदर में जो गैप्स होता है मिलियंस ऑफ गैप्स होता है पोरस होता है वो इसकी वजह से एएससी ब्लॉक से वो लाइट वेट होता है और इसकी वजह से उसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टीज है, थर्मल कंडक्टिविटी है, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट वेट पोरस दैट इज इनसाइड द ब्लॉक्स. This is a flowchart showing the manufacturing process of AAC blocks. It's a fly ash, lime, gypsum, and OPC cement. This is this constitute the pouring mixture, and along with that, water and aluminium is added, and it is poured into block casting molds. After that, it is cured for 12 hours in this autoclaves, and after it has been stacked and packed for sale. What are the process involved in ASC block manufacturing? ASC ब्लॉक जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज दिस रॉ मटेरियल प्रिपरेशन. Second is dosing and mixing. Dosing means dosing of aluminum and mixing. And casting, rinsing and pre-curing, demolding and cutting, autoclaving the blocks and then packing and molding. And these are the 6 processes that is mainly involved in the production of ASC blocks. First, we will discuss about the raw material preparation. We already have discussed that this raw material required for ASC blocks, that is fly ash, lime, cement, gypsum and water along with the aluminum powder. We already discussed कर चुका है. The main ingredient is fly ash. Fly ash is mixed with water to form fly ash slurry. The slurry thus formed is pumped to a separate container to the required quantity. Main ingredient is इसका fly ash है.
80% के ऊपर है फ्लाई ऐश होता है, और फ्लाई ऐश है पानी के साथ मिक्स कर एक स्लरी फॉर्म में एक कंटेनर में पंप कर उसको उसी में स्टॉक करते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलरली लाइम, सीमेंट एंड जिप्सम, एल्यूमिनियम पाउडर और आर स्टॉक्ड इन सेपरेट कंटेनर्स। ये सब है अलग अलग कंटेनर्स में स्टॉक करते हैं। द स्टॉक्ड इंग्रेडिएंट्स आर डिस्पेंस्ड इनटू ए मिक्सिंग पैन एज पर डिजाइन रिक्वायरमेंट। ये जितना स्टॉक कर दिया वो इंग्रेडिएंट्स है, एक मिक्सिंग पैन होता है उसके अंदर में मिक्स करने के लिए डोज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और द डिजाइन मिक्स। Dosing and mixing. The aluminum powder is dosed separately through an attachment fixed to the mixing unit. ये मिक्सिंग पैन है, इसके अंदर में ये मटेरियल को तो ड्रॉप करते हैं, उसके साथ एक अरेंजमेंट होता है, उसी से एल्यूमिनियम पाउडर साथों साथ डोस होता है और उसके साथ एक साथ उसका मिक्सिंग होता है। इसका जो प्रोपोर्शन है फ्लाई ऐश और सैंड इज टू लाइम इज टू सीमेंट। फ्लाई ऐश और लाइम और सीमेंट का जो प्रोपोर्शन जिप्सम का प्रोपोर्शन होता है दैट इज 69 is to 20 is to 8 is to 3, and aluminum is about 0.08 percentage of the total dry material in the mix, and water cement ratio is 0.6 to 0.65. Rinsing and pre-curing. It's the next process which we'll discuss is casting, rinsing and pre-curing. Once the mixture has been agitated for set time, it is ready to be poured into molds using dosing unit. ये जो मिक्सचर है अभी डिस्कस किया था, मिक्सिंग यूनिट के साथ डाल दिया, उसके साथ एल्यूमिनियम डाल दिया और उसका अच्छे से मिक्स करते हैं, उसके बाद जो मिक्सचर जो है वो पोरिंग करने के लिए तैयार हो गया। Molds can be of various sizes depending upon the installed capacity. Before casting, molds are coated with a thin layer of oil. This is done in order to ensure that the green cake does not stick to the molds. Molds है वो बड़ा बड़ा डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी का होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बेसिस पे है, और कास्टिंग के पहले वो मोल्ड जितना है उसको चारों साइड से ऑयल लगाते हैं। इसके लिए तो कास्टिंग करने के लिए हम जब जो मिक्सचर मटेरियल डालते हैं वो उसके साथ स्टिक करने का चांसेस होता है, इसको इंश्योर करने के लिए ये डालते हैं ऑयल का कोटिंग देते हैं। Dosing unit releases this mixture as per set quantities into greased molds. Dosing and mixing process is carried out continuously because if there is a gap in between charging and discharging of ingredients, residual mixture might start hardening and choke up the entire unit. ये डोसिंग जो होता है उसके साथ मिक्सिंग भी होता है, अदरवाइज क्या होता है कि इसका फ्लो बंद होने से वो जो मटेरियल है चॉकिंग का होने का चांसेस होता है, इसकी वजह से इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस। While slurry is mixed and poured into grease molds, aluminum reacts with the calcium hydroxide and water to release hydrogen gas. This leads to formation of tiny cells causing slurry to expand. Such expansion may be thrice its original volume. ये slurry जो मिक्स करते हैं उसके बाद ये मोल्ड्स में पोर करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम जो है ये लाइम के साथ रिएक्ट कर लाइम मीन्स इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ये हाइड्रोजन गैस जो बनता है वो छोटे छोटे जो सेल्स है वो उसकी वजह से जो स्लरी जो है ऑलमोस्ट 3 times ओरिजिनल वॉल्यूम से एक्सपेंड होता है। When rising process is over, this is called rising process. The green cake is allowed to settle and cure. ये प्रोसेस होने के बाद उसका जो थोड़ा दिन सेटल करने के लिए रखते हैं। Usually rinsing and pre-curing process takes about 60 to 240 minutes. Rinsing is depend on raw material mix and weather conditions. Due to this, pre-curing is also referred to as heating room pre-curing. At the end of pre-curing process, green cake is hard enough to be wire cut as per requirements. जो pre-curing होता है वो 60 to 240 minutes लगता है और वो डिपेंड्स होता है जो क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं और क्या वेदर कंडीशंस है। और pre-curing प्रोसेस है उसके बाद जो ग्रीन मटेरियल है उसको वो सॉल्टिफाई हो जाता है और उसके बाद जो वायर से कट करने का जो कंसिस्टेंसी है उसमें आ गया होगा, दैट यू हैव टू चेक। Demolding and cutting. Once green cake has achieved sufficient cutting strength, it can be demolded and cut into required sizes. Once the mold is out of pre-curing room, demolding is done by lifting using cranes. वो crane से जितना है उसको demolding होता है। Demolding
एंड कटिंग आर वेरी क्रूशियल प्रोसेस इन एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग। एसी ब्लॉक का जो मैन्युफैक्चरिंग है, डीमोल्डिंग और कटिंग है, बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है। वंस द मोल्ड इज आउट ऑफ प्री-क्यूरिंग रूम, इट इज लिफ्टेड बाय अ crane or rolled on tracks for demolding operation. Two type of cutting are called horizontal and vertical cutting. Demolding होने के बाद उसको है ना कटिंग करते हैं, वो horizontal cutting भी होता है, vertical cutting भी होता है। उसके बाद है that is the process called autoclaving of blocks. Autoclaving autoclave aerated concrete is cured in an autoclave. That machine where it is cured or steam cured is called autoclave. That is why it is called autoclave aerated concrete blocks. It's a pressure vessel that is normally a steel tube of 3 meter diameter and 45-meter long. The steel tube is fed into the autoclave at high pressure. Normally 800 kPa to 1200 kPa का प्रेशर मेंटेन करता है और 180 डिग्री का टेम्परेचर होता है। और जो कट किया हुआ ब्लॉक्स है वो एक ट्रॉली के साथ इसके अंदर में जाता है और उधर में वो हार्डनिंग होता है और उसके बाद उसको यार्ड में लेकर आता है पैकिंग करने के लिए। पैकिंग एंड लोडिंग। आफ्टर कटिंग द ब्लॉक्स विल स्टेक ऑन पेलेट्स फॉर टर्नओवर। नॉर्मली पेलेट्स में स्टेक करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थैंक यू।